This conference will now be recorded. एक मिनट रुकना यार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। लास्ट सेशन में क्या करा था हमने? Inheritance polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं करा ना अभी? नहीं सर। No, sir. Only inheritance and super keyword. हाँ जी। ठीक है, तो ये टॉपिक करेंगे आज। हाँ जी, सुपर कीवर्ड का क्या यूज था? व्हाट वाज द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड? If you want to call the constructor from one class to another class, then you use super keyword. मल्टी लेवल आगे करेंगे, निखिल आगे करेंगे भाई, वो डिपेंडेंसी है कुछ उसमें। सुपर कीवर्ड is used for calling the parent parameterized constructor, right? ये यूज था सुपर कीवर्ड का। हाँ जी, सुपर कीवर्ड का क्या यूज था? हाँ जी To the रविंदर। parent parameterized constructor. यस, हाँ जी, क्या यूज था सुपर कीवर्ड का सुशांत? हाँ जी, सुपर कीवर्ड का क्या यूज था? हाँ जी, सुपर कीवर्ड का यूज बताओ ऋतिक। ऋतिक, सुशांत। चलो, सुपर कीवर्ड is used for calling the parent parameterized constructor. Second use, super keyword is used for calling the parent method, parent class method. Third use, super keyword is used for calling the parent variables, Variable. right? सुपर कीवर्ड के क्या यूज थे? क्या यूज है टोटल? Is used for calling parent parameterized constructor, parent class method, and parent variables. यस, हाँ जी वैभव। हाँ जी, चलो प्रैक्टिकल करते हैं एक बार। Let me create a class. So here I'm going to create a new class.
class 1. This is my class 1. Mute kar lo please. In this class, we have a method 1. Mute kar lo. Amit bhai mute kar lo please. Parent method. So how many methods we have created? 2 methods. 2 methods. Right. Let me create one more class. This is class 2. Which keyword is used for inheritance? Extends. Extend. Extend. So here we have created another method, that is Child child method. child method. So here I have created the main method. From main method, I'm calling which method? Method 3. Mute कर लो please, mute रखो यार. Mute रखो. So which method I'm calling? Parent Child method. method. Child Child method. Oh, sorry. Child method. From child method, I want to call super dot method 1. So here control will go to which statement? parent class. Parent method 1. Parent class. Method 1. Parent method 1. What is the output? Parent method, child method. Parent method plus. Parent method plus child method. Plus child method. Right? Any question? Any question? Let's suppose I want to call the parent second method as well. How code will execute? Parent, then child, then again parent. Yes. Parent, child, again parent. Right? In case of method calling, you can write more than one super statement, and you can write anywhere. In case of method, in case of constructor, super will key. be the First. first statement in the child class constructor, and we can't write more than one statement. one super Key. statement in the child class constructor. हाँ जी, किसी का डाउट? एक बार सब लोग चैट में अपडेट करो प्लीज. हाँ जी. Sorry to say, guys, please stop chewing. म्यूट कर लो प्लीज सब लोग ना. हाँ जी, क्लियर है सबको? सेकंड यूज ऑफ सुपर कीवर्ड, अमित खन्ना. Yes, sir. जी क्लियर है भाई? हाँ जी सर, clear. हाँ जी. थर्ड यूज, let's suppose we have this is our parent class. In the parent class we have a variable int Deepak.
I want to call this variable. Again, I can call. Yes or no? Yes. Right. Here I'm printing as well. Super dot Deepak. Good morning, Deepak sir. गुड मॉर्निंग भाटिया जी. दीपशिका भी कुछ नहीं, वही डिस्कस करा. सुपर कीवर्ड का सेकंड यूज देखा, मेथड को कॉलिंग करने के लिए, पेरेंट क्लास के मेथड को कॉलिंग करने के लिए. व्हाट इज द थर्ड यूज? Calling variable of parent class. हाँ जी. और बात तो नहीं आ रही? हाँ जी. आ रही है? म्यूट कर लो भाटिया जी, म्यूट कर लो. म्यूट कर लो भाटिया जी, म्यूट कर लो. हाँ जी, एक बार सब लोग चैट में अपडेट करो यार. सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो. So super keyword is clear to everyone. Second use, third use. हाँ जी रविंद्र भाई, क्लियर? चलो. Yes, sir. Assignment on super keyword. Output should be in the below sequence. Parent, 3 parameterized method. Parent, default method. Parent, 1 parameterized method. Child, a parent, 2 parameterized method. Child, default method. Child, 1 मिनट रुकना. हाँ जी, child 3 parameterized method. Child 1 parameterized method. Child 2 parameterized method. हाँ जी, क्वेश्चन आया कुछ. rather than creating two different, can we use inheritance concept? कर सकते हैं रविंद्र भाई, लेकिन इंडस्ट्री में नहीं होता ऐसा. we can create 2 classes within same class, but रियल टाइम में नहीं होता ऐसा. रियल टाइम में नहीं होता. हाँ जी. Can anyone please put the screenshot of this assignment in the group? हाँ जी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट का असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट डालेगा कोई ग्रुप में? हाँ जी, किसी का डाउट? चैट में अपडेट करो एक बार, आगे मूव करते हैं. हेलो हाँ जी. सर, एक बार फिर से समझा दीजिएगा, नेटवर्क इशू हो गया था, नहीं देख पाया था. फरहान भाई यार देखो, एक बार ना यार सब लोग प्लीज देखो, एक एक बंदे के लिए ना अब पूरी क्लास का लॉस है उसमें. पूरी क्लास का लॉस होता है ऐसे. एक बार चाहे रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लेना, क्योंकि अगर वही टॉपिक्स दोबारा एक्सप्लेन करूंगा वो फिर थोड़ा सही नहीं है ना. एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या था. सुपर कीवर्ड इज यूज्ड फॉर कॉलिंग द पेरेंट क्लास मेथड इन केस ऑफ, right? If you want to call the parent method as well, we can use the super keyword. If you want to call the parent variable as well, again we can use the super keyword. तो super keyword के आपके 3 यूज है. If you want to call the parent parameterized constructor, if you want to call the parent method, if you want to call the parent variable, again which keyword we can use? Super. सुपर कीवर्ड. Super keyword. सुपर कीवर्ड. हाँ जी.
What is the use of super keyword? Super calling parent Super parameterized keyword is constructor. Second use. Parent variables, parent class method. चलो जी असाइनमेंट हो गया. Now, what are the different OOPS concept? Inheritance, Inheritance, polymorphism, polymorphism, encapsulation, abstraction. Class and object. Inheritance, polymorphism, encapsulation. Encapsulation, abstraction, class and object. ठीक है. Now, polymorphism. Poly means many. One thing, many forms. One thing. Manifold. Right? One thing. Many forms. There are two type of polymorphism. कितने टाइप का polymorphism है? Two type. Right? First one is the static polymorphism, or we can say compile time polymorphism, or we can say method overloading. Second type, dynamic polymorphism, or we can say runtime polymorphism, or we can say method overriding. Right? कितने टाइप का polymorphism है? Two types. Two types. Two type. Two types हाँ जी, of कितने टाइप का? polymorphism. There are two type of polymorphism. Right? Now, while designing a method, there are three things. While designing a method, there are three things. Method name, it should be relevant. Method input parameters. Third one. Method out. Return type. हाँ, output or return type. Now, static polymorphism. What static polymorphism says? एक मिनट रुकना सब लोग, एक मिनट देना प्लीज. There are two type of polymorphism. First one is the Static. second one is the dynamic. dynamic, What is the second name of static polymorphism? Compile time polymorphism or method overloading. Or method overloading. What is the second name of dynamic polymorphism? Runtime. Method overriding. Static polymorphism. What it says? Method names will be same. Method inputs data type will be always different. Method output data type
Can be same or can't be same. What are the rules of static polymorphism? Kunal? Method name will be same. Hmm. Method input data type will be different. Hmm. Method output data type can be same or can't be same. Yes. Now let's see the example. Let's see the things practically. Now, for example, we have a method. Which type of method is this, Pawan? Which type of method is this? Default or parameterized? Default, sir. Parameterized, sir. Sorry. Two Parameterized. parameterized. कितने parameterized? Two parameterized. Two parameterized. हाँ जी. Two parameterized method. And what is the purpose of this method? Add Some results. Sir. some Addition of A plus B. Integers A and integer B. addition of two number. Addition of mute कर लो please. Addition of two number. Addition of numbers. हाँ जी. म्यूट कर लो प्लीज एक बार. प्रतिभा म्यूट कर लो. Now I want to overload this method. I want to overload this method. What is the rule of overloading? Amit Khanna? So rules of method overloading is method name will be the same Hmm. and method input parameters won't be same No. and Method input देखो एक बार. Method input data type, it will be always different. हाँ वही तो बोला है won't all, be all same. अच्छा और यही बोला आपने. Always different. क्या होगा? Method input data type will be always different. For example, here my method is expecting how many parameters? Two parameters. Two parameters. Right? How many parameters? Two parameters. Two parameter, right? So here this method, is it possible? Is it possible? No. No. Why it is not possible? Mira? Because it is also two parameter, it is also two parameter. So what was the rules? What was the rule? Different input data Will be type. different. Always different. For example, here I'm writing int float. Now is it possible? Yes. Yes, sir. Right? In the above method, it Yes, is sir. expecting, and in the first method, it is expecting two integer. In the second method, it is expecting, what it is expecting? Integer and float. Integer and float. Float. Now, is it possible? No. 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 Now, Possible. Possible. now, No. why no? Why we are saying no? Why we are saying no? Yes. Yes. Basically, here one float, another int. Here first is int, second is float. So it's possible, na? Yes, sir. Possible. Basically, firstly, it will compare the number of parameters. If number of parameters are equal, then it will check the sequence of the parameters. It should not match. If number of parameters are not equal, then it will work.
Any question? Any question? पैरामीटर सर पैरामीटर अगर जैसे अपन 2 पैरामीटर है तो 3 पैरामीटर्स भी अलग अलग करके कर सकते हैं क्या सर? कर सकते बिल्कुल। देखो मैंने क्या कहा, फर्स्टली इट विल चेक द कंपेयर द नंबर काउंट जी सर। count of parameter. If count of parameters are equal, then it will check what it will check. Sequence of parameters. Yes, Himanshu. Data type it will check, not variable name. Variable name कभी पिक्चर में नहीं लाओगे, right? What is important for us? The data type. Data type. If number of parameters are not equal, again in this case no need to check the sequence. Yes, the data type sequence. It will work. Right? Now output can be Same or different. same or different. Here output is same or not? Same. What is the purpose of second method? Addition. Ton of three numbers. Addition of three numbers. Addition of three numbers. addition of इंटीजर्स है या number. इंटीजर्स भी? Addition of three integers number. addition of three numbers. Now why it is compile time? Basically, while writing the code, we are deciding which method we want to call, right? It's up to us. For example, here I am going to create the class object. Now I want to call which method? I want to call to parameterize or Three parameters. Three parameterized. or I want to call both. Any doubt? Anyone? No, sir. Any question? Hanji. Guys, please give confirmation in the chat. Calling a sequence can be anything, right? Yes, exactly. It's up to us. For example, firstly, I want to call three parameterize. I can call. Then I can call हाँ जी एक बार सब लोग अपडेट करो next one is Runtime polymorphism. runtime polymorphism. There are two possibilities of inheritance. What is the first possibility of inheritance? What do you mean by inheritance?
you want to call from in child class, we want to call for parent class. Use the method and variables Hmm. with extra. Inquiring the properties parent class to child class. With the help of inheritance, we can call the parent method and parent variable using Child class object. using Child class object. right. Now, second possibility of inheritance is that child class can override the Parent class method. parent class method. What is the second possibility of inheritance? What is the second possibility of inheritance? Child class can override the parent class method. Yes. So it means overloading happens. It happen within same class. Class. Within same class. And it happen in case of बताओ Inheritance. Overriding inheritance. happen in different class or inherit. Inherit, not Child over. class. Right. So there are some rules of overriding as well. Method name will be same in the child class. Method input data type same. Method output data type same. Where will be the difference? Where will be the difference? Method input. In the Method body. Input and output. Input data in the type. method body. Why we are saying input output? Input output will be same. Why we are saying input output? Let me show. For example, I'm going to create a class ABC. In this class, we have a method. So what is the purpose of this method? Addition of two number. I'm going to create one more class. Extends. Now, what are the two possibility of inheritance? To inherit superclass methods and variables. Yes, what are the two possibilities of inheritance? Calling parent method and variable with class object. First possibility of inheritance. In child class, we call to We can parents method and With the help variables. of child class object, what we can do? We call both parents method and variable. So here I'm using the which possibility of inheritance? With the help of child class object, what I'm doing? Calling parent method. Call to parents method and class. Method and variable. Calling the Parents method. Parent variable. parent method.
Yeah. Right? Now, what is the second possibility of inheritance? Override the Child class parent method class. overrides parent Override the class parent method. class method in Child class can. What are the rules of overriding? The name should be Method same. name and Method name name, must be parameter, same everything should be same and in method both the output class. also. Name be same or output or input same. Same except body. एक मिनट रुकना सब लोग. हाँ जी. What are the rules of overriding? Method name will be same in the child class. Method input parameters Are same. and output. Method output are same. Are same. And where will be the change? In Method both. Right? Where will be the change? Body of the method Body of the method in the child class. in child class. What will be the output in this case? Which method has been called? child method, sir. Child method. Which method has been called? Child method. Child Child method. class. Now let me show a diagram. Method exists in parent, method does not exist in child. Which method will be called? Here it exists, here it does not exist. Which method will be called? Parent or child? Parent. Parent method. Which method will be called? Parent method. Method exists in the parent, method exists in child, means overriding happen. Which method will be called? Child method. Child method. Good one. If method does not exist in the parent, it exists in the child only. Child method. Here it does not exist, here it exists, so it will call Child. any doubt anyone? दोनों में होगा तो कैसे होगा सर? दोनों में होगा, ये भी करा ना, देखो बॉडी भी सेम होगा. इट बॉडी सेम नहीं होगी, फिर ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट ही नहीं आएगा ना. What do you mean by polymorphism? One thing, many forms. Here we have different form, different purpose. The purpose of the parent method arithmetic is addition of two number. The purpose of arithmetic method in child class purpose is here subtraction of two number. तो बनाने का कोई मतलब नहीं होगा ना उस केस में, अगर आप सेम कर रहे हो बिल्कुल. हाँ जी. So कुणाल, हाँ हाँ प्लीज. तो ऐसा कर सकते हैं कि जब हम कॉल कर रहे हैं तो हम ऑल्दो इस केस में तो चाइल्ड पॉलीमॉर्फिज्म के केस में ओवरराइडिंग के केस में अभी चाइल्ड मेथड कॉल हो रहा है. अगर हम चाहते हैं कि पेरेंट मेथड कॉल हो तो कोई है सर ऑब्जेक्ट बना लो पेरेंट का बस. If you want to call the parent method also, you can call. Right? Okay. Kunal, what is the difference between static polymorphism and dynamic polymorphism? Static polymorphism के केस में method name will be same. Major difference. First major difference.
फर्स्ट मेजर डिफरेंस Overriding एनीवन? हाँ प्लीज. Static is method overloading and dynamic is method overriding. नहीं, कुछ और मेजर डिफरेंस सोचो. Sir, method overloading में दो we need to it is in same class उसमें and in overriding it happen in different class. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. inheritance Method use हो रहा है कि नहीं? overriding happens in case of Different class or inheritance. नो डिफरेंट क्लास. डिफरेंट क्लास नहीं बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे. डिफरेंट क्लास का इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आएगा ना. नाउ हाँ जी. अनदर डिफरेंस. in case of Overloading. input parameters will be Same. overriding. Output parameter in case of और इसमें Same. हाँ जी, किसी का डाउट? No, sir. चैट में एक बार अपडेट करो सब लोग, आगे मूव करेंगे. सर एक कंपाइल टाइम होगी, एक रन टाइम. हाँ जी भाई, हाँ जी. सर एक बार डायग्राम दिखा देंगे क्या, डायनामिक और उसका स्टैटिक? एक मिनट रुकना बस, मैं एक बार ये टॉपिक हटा रहा हूँ, एक मिनट देना. हाँ जी, इसका भी कोई चाहे डाल दो एक बार स्क्रीनशॉट. Sir, I have one question. अभी लूंगा रविंद्र भाई, यही क्वेश्चन मैंने डाला है, अभी लूंगा वो क्वेश्चन. सर हाँ जी, हाँ जी अमित मेरा भाई. क्वेश्चन है सर, ये जैसे लिखा है ना आपने, इट हैपन विद इन सेम क्लास ओवरलोडिंग में, तो इसका एक बार प्रैक्टिकल दिखाना, एक बार जो आपने किया. ये तो आपका ओवरराइडिंग है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लास आई. लेट मी शो. ये लो, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, तो दोनों चीजें कहाँ पे है? बोथ द मेथड्स इन द सेम क्लास. ठीक है, सेम क्लास. सर ओवरलोडिंग में भी बॉडी डिफर और सेम दोनों हो सकते हैं या फिर सिर्फ सेम होगा? देखो जी, और आपका पोलीमॉर्फिज्म, पोलीमॉर्फिज्म मींस one thing many forms. So if we are doing the same purpose of both method, then it is not polymorphism ना. नहीं सर, जैसे हम पैरामीटर्स अगर अलग अलग करें इन द केस ऑफ ओवरलोडिंग, फर्स्ट मेथड वी आर एडिंग 2 numbers and in second method we are adding 3 numbers. In both the cases we are performing addition, so yes it can be done, na? but the purpose of both the methods should be different. In First both method overloading and overriding both. Yes, first method in case of overloading, addition of 2 number. Second method, addition of 3 numbers. 3 number. एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं सेकंड में. बिल्कुल सही कह रहे हो रविंद्र भाई. Now let me take some real time example of overloading and overriding from the automation point of view. चलो जी, ध्यान से समझना पहले. Let's suppose we have a class.
we have a class what is the name of the class? Excel handling. Excel handling. Haji, what is the name of the class? Excel handling. In this class, our first method, what is the purpose of this method? What is the name of the method? Data fetch. Excel data fetch. So here it will give you the data of a particular cell number, right? हम इस method को what we are passing, what we are giving to this method? Two integers value. Parameter. Row number and column number of that cell. Row and column. हाँ जी, right? Purpose, what is the purpose of this method? We are overloading this method. What is the name of the method? Name Excel data fetch. Excel data fetch. Here it will give you the data of a Particular row. Particular row. so what we have done here, क्या करा यहाँ पे? Method overloading. हाँ जी, मेथड की क्या करी? What we have done here, संदीप? Overloading. Overloading. What are the rules of overloading? Method name but different input types. Input are different, but name are same. Output are also And output? also different. Output can be Here we same have or cannot be same. can, yes. This is the example of or Compile. एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी डाल देना कोई. पर ये प्रैक्टिकल यूज तो ठीक, मतलब ठीक है, एग्जांपल तो ठीक है, बट इसमें तो मैं दूसरा मेथड नेम भी यूज कर सकता था ना. बट ओवरलोडिंग का रूल क्या कहता है? नहीं, ओवरलोडिंग मुझे करनी ही नहीं होती, मतलब जरूरत तो नहीं है ना इसमें, नीड तो नहीं है ना मुझे. दूसरे बेसिकली मेथड, अगर मैं दूसरा मेथड बनाता तभी मेरा काम चल जाता. नहीं, देयर आर सम जावा स्टैंडर्ड, जावा के स्टैंडर्ड है. although you can do by creating the another method with another name, you can do, definitely you can do, but we have to follow the Java standard as well, right? Now let me take, guys, please give confirmation in the chat box. Here I'm giving another example. So this is my base class. This is my base class. In the base class, we have a method 1. Here we have a Another method. method 1. Method name is browser handle. So it is handling Chrome browser. Which browser for us? Chrome browser for us. Right? It is handling which browser? Chrome browser. Right now,
we have first child class, we have second child class, we have third child class. Which type of inheritance is this? Hierarchical. Good one. Hierarchical. Right. Now, our TC1 class, it wants to execute the thing on Chrome. What it will do? By creating the TC1 object, can I use this method? Yes or no? Yes, with extend key. Can I call this method? Obj dot. Yes, sir. So which browser will be called? Will be hit? Chrome. Chrome browser. Chrome browser. TC2 wants to execute the things on Firefox. What it will do? Overwriting the method and Yes. you It will create another method here. The method name will be same. Here purpose, what we are writing? we handle the Firefox browser. Good one. Now what we can do? By TC2 object, what we can do? Call the browser handle method. Good one, good one, good one. Right? Now, हाँ जी, 1 मिनट देना सब लोग प्लीज. एक मिनट देना प्लीज सब लोग. What is my third class? TC3. TC3. TC3 wants to do हाँ जी, TC3 wants to execute the thing on I browser. What it will do? Will create Method overriding. Again, TC4. It want to execute the thing on Chrome. What it will do? Call the parent method. Any doubt, anyone? बट So इन this केस is the example. TC4 वाले टेस्ट केस के अंदर अगर हमें आई वाला टेस्ट केस रन करना होता तो आप Then- इसको ओवरराइड कर दो, यहाँ पे ओवरराइड कर दो. So this is the example of Method overriding. Overriding or dynamic. Can anyone please put the screenshot of this image as well? Sir? हाँ जी, please. सर मैं ये बोल रहा था कि TC1 और TC4 को तो सर अपन खाली एक्सटेंड से ही अपन कॉल कर सकते हैं ना सर, इसमें अपने को ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी. बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल सही है. पवन आपके क्वेश्चन थे सर. अरे पवन आपके थे ना? जी सर, जी सर. भाई बहुत अच्छे. हाँ जी, ठीक है. तो आज अपना इतना ही रख रहा हूँ. जो 2 चीजें आज वी हैव टू टेक केयर. एक तो असाइनमेंट 1 था, दैट इज ऑन सुपर कीवर्ड फॉर मेथड कॉलिंग, फॉर पेरेंट मेथड कॉलिंग, एंड सेकंड वन प्रैक्टिस ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म. ये बहुत अच्छा, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इतना ही रख रहा हूँ यार. और पेस वाइज ठीक है ना, सब कुछ सही चल रहा है ना सबका? बहुत अच्छे से करा रहे हैं सर. हाँ जी, ऑल गुड. सही चल रहा है पवन भाई? हाँ जी, कुछ बाकी सर. लोग बताओ यार, सबका सही चल रहा है? यस सर. Yes, sir. Perfect, sir. यस भाई. हाँ जी, डोली, अन्नू सही चल रहा है सब कुछ आपका भी?
अमित 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 खन्ना, अमित वर्मा, अंकित, सर यश भाई, मीना ठीक है जी, मीरा practice wise we are good. Okay then, guys, tomorrow I will not available. Tomorrow I have some like family emergency, so need to travel. So tomorrow I will not available. I will try to arrange a backup session on weekdays if everyone is available. Otherwise I will not take. I will try to arrange a backup session on weekdays on 9 p.m. IST. If everyone is available, then I will take. Otherwise, I will not take. सर 9 PM सर डिफिकल्ट है सर। बाकी लोग बताओ। Yes sir, 9 p.m. Okay for me. 9 p.m. is okay. No problem. 9 p.m. 9:30. नहीं सर प्लीज थोड़ा ठीक लगा लो 9:30 पे मत जाओ सर, मैं तो 8 बजे बोल रहा हूँ। एक और प्रॉब्लम 9 PM सही रहेगा एट तक हो जाएगा सर। वीकडेज में। चलो एक काम करते हैं, मैं ना एक बार ग्रुप में कोऑर्डिनेट कर लूंगा। आई विल कोऑर्डिनेट इन द ग्रुप, और जैसे लोगों का रिस्पॉन्स है उस हिसाब से प्लान कर लेंगे, है ना। अगर सब लोग हैं तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अदरवाइज व्हाट आई विल डू, एक मिनट रुकना सब लोग, एक मिनट रुकना प्लीज। व्हाट आई विल डू, म्यूट कर लो। आई विल कवर एक्स्ट्रा टॉपिक ऑन अपकमिंग वीकेंड, ऐसा कर सकते हैं। ओके सर, ये ज्यादा सही रहेगा। हाँ जी, ऐसे सही रहेगा। यस सर, जी सर जी सर, ये सर ये सही रहेगा, है ना। हाँ, ये सही रहेगा, है ना, ये सही रहेगा, ताकि किसी का लॉस भी ना हो। अभी सबको सर डज इम्प्लिसिट कॉल हैपेंस इन सुपर क्यू नॉट इन केस। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग इन सम टाइम एंड आई विल अपडेट यू गाइस, राइट। सो नेक्स्ट वीकेंड ही एक्स्ट्रा टॉपिक कर लेंगे यार, वो ज्यादा सही रहेगा। Okay. ठीक है ना सर, थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. ओके, थैंक यू बाय सर। बाय। Okay, sir. ओके जी, बाय। Thank you. ओके थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय। Thank you, sir. ओके जी, बाय बाय अनिरुद्ध। ओके जी, बाय भारती।